Hello dear students, we have started with our water microbiology, and in previous lecture we have discussed about the types of water. Now in this lecture we are going to discuss our next point, which is bacteriological standards of water quality. So state government and central government has given the some standards related to or some standards of water. So what are that standards that we are going to see in this lecture and in further lectures? So two councils are been there. First is MPCB and second is CPCB. MPCB stands for Maharashtra Pollution Control Board, which is the state government policy, and second is Central Pollution Control Board, which is given by the central government. So let's see first MPCB, which stands for Maharashtra Pollution Control Board. इसे मराठी में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी कहते हैं. It was established in the year 1970 on 7th September और ये काम करती है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. सो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के अंडर ये काम करती है ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट. इसका लोगो दिया गया है नीचे एंड इट इज बीन सेड महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल. एज द नेम इंडिकेट्स, दिस बोर्ड इट कंट्रोल्स और इसका फंक्शन होता है टू कंट्रोल द पोल्यूशन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेरिक एयर. So let's see what are the functions of MPCB. First of all, the main function is to plan or to execute programs for prevention control of pollution. ठीक है, इसका काम क्या है कि ये प्लान करती है और वो प्लान को एग्जीक्यूट करती है. किस लिए? फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द pollution. Okay, control of the air pollution, control of the water pollution, any type of pollution. इसीलिए काम करती है अंडर एनवायरमेंट. ओके, और वी कैन से अंडर, हमने जैसे प्रीवियस स्लाइड में देखा, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट. नेक्स्ट फंक्शन इज टू कलेक्ट एंड स्प्रेड द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन और कंट्रोल. ठीक है, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करती है कि कैसे हम पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं. ये इंसान के ही हाथ में होता है टू कंट्रोल द पोल्यूशन बिकॉज इट इज स्प्रेड बाय द ह्यूमन इटसेल्फ. सो ह्यूमन इज ओनली वन थिंग दैट ही कैन कंट्रोल द पोल्यूशन. सो दैट इज देयर. थर्ड, it can, or we can say, to look for the sewage treatment plant and disposal facilities, plus to look over air pollution control system, to review plans, specification, data related to the treatment plants. ठीक है, तो ये क्या करती है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम कर रहा है या नहीं, जो वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है इंडस्ट्री से, जो वेस्ट डिस्पोज हो रहा है वो प्रॉपरली और ट्रीटमेंट से डिस्पोज हो रहा है या नहीं. ओके, सो दैट इट डजंट हार्म द एनवायरमेंट. Okay, so it looks for the sewage treatment plant and even the disposal facilities. Again, it deals with the air pollution control system. It जो कमिटी है उनसे ये डिस्कस करते हैं, प्लान, स्पेसिफिकेशन, डाटा कलेक्ट करते हैं कि कितने अमाउंट में पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, कितने अमाउंट में पोल्यूशन स्प्रेड हो रहा है. ओके, सो इट रिव्यू द प्लान, स्पेसिफिकेशन, डाटा रिलेटेड टू दिस treatment plants. Next, it supports and encourages the development in the fields of pollution control, waste recycle use and eco-friendly practices. तो ये सपोर्ट करती है, कुछ ऐसे प्लान्स इनकलकेट करती है, एनकरेज करती है, मोटिवेट करती है for the pollution control acts, or we can say how the waste can be recycled, how the waste can be reused and how we can create the eco-friendly environment.
Next, it educate and guide the entrepreneurs in improving the environment by suggesting appropriate pollution control technologies and techniques. अगर हम ऐसे technologies और techniques implement करते हैं, definitely we can control the pollution. If we use or if we reuse the waste, if we recycle the waste, we can control the pollution. अगर हम प्लास्टिक का कम यूज़ करें, व्हीकल्स का कम यूज़ करें, तो डेफिनेटली वी कैन कंट्रोल दी पोल्यूशन. Creation of public awareness about the clean and healthy environment and attending the public complaints regarding pollution. So it create the public awareness among the or in the public, okay, कि अगर हम वेस्ट डिस्पोज करते हैं इनटू द फ्री एनवायरनमेंट, हाउ हजार्डस इट इज़ टू डिस्पोज द वेस्ट इन फ्री एनवायरनमेंट. सो इसके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करती है अमॉन्ग पीपल. इट मे लीड टू द पोल्यूशन प्लस इट मे लीड टू द अदर इन्फेक्शियस डिसीजेस एंड सम इट ऑल्सो लिसन्स पब्लिक प्रॉब्लम्स या फिर पब्लिक कंप्लेंट पर भी ये काम करती है. So these are the functions of Maharashtra Pollution Control Board, and the committee handles it very properly, how the pollution can be controlled or how the pollution can be prevented. Now here is the table showing designated best uses of water, या फिर हम कहेंगे जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है designated best use of water. The table consists of water quality standards. कैटेगरी दी है फ्रेश वाटर की और कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं. स्टैंडर्ड्स जैसे कि हम बोलते हैं फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन. तो इस टाइप के यहाँ पर स्टैंडर्ड्स दिए हैं A1, A2, A3 एंड A4. सो फर्स्ट कैटेगरीज ऑफ A1, तो क्या इंक्लूड है उसमें? अनफिल्टर्ड पब्लिक वाटर सप्लाई आफ्टर अप्रूव्ड डिसइंफेक्शन. सो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, हम A1 कब इंडिकेट करते हैं? जब वाटर ये अनफिल्टर्ड होता है एंड दैट अनफिल्टर्ड वाटर इज सप्लाइड आफ्टर डिसइंफेक्टेंट, मतलब उस पर डिसइंफेक्शन की ट्रीटमेंट की गई है लेकिन इट इज़ नॉट बीन फिल्टर्ड. सो दैट वाटर इज रिप्रेजेंटेड एज A1 कैटेगरी. सेकेंड है A सेकेंड कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी इज A सेकेंड. वो हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? पब्लिक वाटर सप्लाई विथ अप्रूव्ड ट्रीटमेंट इक्वल टू कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिसइंफेक्शन. तो जब वाटर ये फिल्टर्ड होगा, ओके, पब्लिक वाटर विच इज बिन वी कैन से फिल्टर्ड एंड उसको ट्रीटमेंट दी गई है, ट्रीटमेंट जैसे कि कोगुलेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिसइंफेक्शन, then that water is characterized under a second category. Next category is not fit for human consumption, fish and wildlife propagation. So that water is categorized under a third category, which is not fit for the consumption of human and other wild animals. So that is under the A third category. लास्ट कैटेगरी है A फोर्थ. A फोर्थ के अंडर वाटर कैसा होता है? फिट फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कूलिंग एंड प्रोसेस वाटर. ओके, हम वो वाटर यूज़ कर सकते फॉर एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए एंड दैट वाटर इज कैरेक्टराइज्ड अंडर A4 कैटेगरी. तो ये जो टेबल ऑब्टेन्ड है, इट इज़ obtained from the MPCB, that is Maharashtra Pollution Control Board. Second table है about the concentration of some toxic substances. तो toxic substances में include है arsenic. arsenic present चाहिए 0.3 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये appropriate quantity है. Next is cadmium, chromium, cyanide, lead, boron, mercury, ग्रॉस अल्फा एक्टिविटी, ग्रॉस बीटा एक्टिविटी. तो ये सब टॉक्सिक सब्सटेंस है जो वाटर में प्रेजेंट नहीं चाहिए या फिर बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए. और इस ये स्टैंडर्ड टेबल दिया गया है विच इज़ बीन गिवन बाय द MPCB.
So yes, this is the quality, or we can say मेजरमेंट्स, या फिर हम इसे क्वालिटी ही कहेंगे, जो वाटर में सर्टन अमाउंट में प्रेजेंट चाहिए. नेक्स्ट टेबल इज सब्सटेंसेस विच अफेक्ट द हेल्थ, लाइक फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स आर देयर, उसकी भी क्वांटिटी दी गई है. लास्ट टेबल इज सब्सटेंस अफेक्टिंग द पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है. ओके, तो ड्रिंकिंग वाटर में से कौन से सब्सटेंस है विच अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पोर्टेबिलिटी ऑफ वाटर. तो पीएच है, टोटल डिजोल्व सॉलिड है दैट इज टीडीएस, टोटल सॉलिड्स है टीएसएस है दैट इज टोटल सस्पेंडेड सॉलिड. तो इसकी अमाउंट ये डिसाइड की गई है विच इज द स्टैंडर्ड विच इज गिवन इन टेबल. तो पीएच चाहिए जनरली ड्रिंकिंग वाटर का 6.5 to 8.5, 6.0 to 8.5. ओके, सो दिस इज द वी कैन से क्वालिटी. अगर 6.5 to 8.5 होगा तो the water comes under the A1 category. If the pH is between 6.0 to 8.5, then it comes under the A second category. If it is 6.5 to 9, it comes under the A third category, and so on. Same is the case with TDS, TS. और जो टेबल 2.2 है उसका भी सेम है. अगर आर्सेनिक 0.3 मिलीग्राम पर लीटर प्रेजेंट होगा तो वो अंडर A1 कैटेगरी आता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दी MPCB. व्हाट इज MPCB एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन, और क्या स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो डिसाइड करता है वाटर की कैटेगरी फ्रॉम A1 to A4. आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर. थैंक यू.